अमित राज इज आस्किंग, सर प्यार से दूर कैसे रहे, लड़की छोड़ के चली गई। सपना इज आस्किंग, क्या मार्केट बंद हो सकता है? Someone is asking, what's your hair routine, भाई? I was asking you that. I was asking you what's your hair routine. Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and I welcome you to another episode of We Simplify series। आज का टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रेडिंग। आपको आज बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज देता हूं। मेरे साथ एक ऐसे ट्रेडर बैठे हुए हैं who is having a wide experience of 10 years। 10 साल का एक्सपीरियंस है। और क्या होता है ना, हम सबके मन में एक बन जाती है, एक फोटो बन जाती है जब हम सोशल मीडिया पे किसी को देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। तो मेरे हिसाब से जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था 2018 में, 19 में, 20 में, तो कुछ भी नहीं था यूट्यूब पे। एडम खू नाम के ट्रेडर थे सिंगापुर के, और एक और ट्रेडर थे जो यूट्यूब पे कुछ कंटेंट था ही नहीं स्टैंडर्ड का, तो मैं उनको देखा करता था। और आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूं इस चीज के लिए कि आज उनके साथ बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूं। सो टुडे वी हैव अ ट्रेडर हु इज हैविंग 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये तो बता दिया। एंड अगर मॉनेटरी टर्म से बात करेंगे तो हु हैज मेड अराउंड 150 करोड़, 150 करोड़ रुपए बनाए हैं। अब 150 करोड़ आपको पता है बहुत बड़ा नंबर है, बट ये नंबर जानने से आपको ये समझ में आएगा कि डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस क्या होगी। तो आज का वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने वाले तो मेक श्योर इस वीडियो को तभी देखें जब आपके पास टाइम हो, तो वॉच लेटर में डाल दें, लाइक कर दें, बिकॉज वीडियो इज गोइंग टू बी अमेजिंग। सो गाइस, नाउ वी हैव उमर अशरफ विद अस इन बूमिंग बुल्स ट्रेडिंग फ्लोर। एंड कैसा लग रहा है उमर भाई, आफ्टर आई बिलीव 1 साल हम लोग अभी ऑनलाइन अपने वीडियो बनाया था, आज अपन ऑनलाइन बैठे हैं। How are you feeling today? It feels a lot better. In person बैठे हैं, in person में बहुत ज़्यादा. The office is beautiful, by the way. Way nicer than most offices I've been to. Camera can't pick it all up. Camera में सब नजर नहीं आ रहा है। वैसे जब इधर होते हैं, the feeling, the excitement, the power that you feel in this room is powerful, man. So good job with it. Thank you so much. And a lot of people don't know, but Umar Ashraf speaks Hindi as well, Urdu as well. That is great for my. So Umar, a lot of people already know you, but a lot of people जो आपको नहीं जानते हैं. Sure. How about we start with a little introduction of yourself, like how you came into trading, like आप कहाँ पे रहते थे, अभी आप दुबई शिफ्ट हो गए हो, great news actually. तो like what's going on in your life, like what has been your journey till now? Sure. So मैंने trading start की थी जब 18 साल का था. I went on Forbes.com. I looked at who's the richest people, and Forbes.com में जो सबसे अमीर लोग थे, number 1 and number 2 and number 3 were hedge fund managers, meaning they manage, stock portfolios, manage big positions and so on. So I was like, okay, I want to do what they do. जो भी ये करते हैं मैंने करना है. तो मैंने देखा stock trading. So I'm like, okay, at 18 years old, I went, I opened up an account, I put $20,000 in, I saved up 20,000 US dollars, and in 6-8 months, I lost it all. Right? No risk management, no understanding of the market, कोई समझ नहीं थी क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा. तो वो सब पैसे मतलब वेस्ट हो गए थे। वेस्ट हो के 6-7-8 मंथ्स के बाद फिर मैंने एक स्टेप बैक ली और सोचा कि मुझे क्या करना है कि अगर I want to get good at the market. If I want to get good at the market, I need to learn this, and I spent the next 2 years learning about the market, learning about myself, market psychology, my psychology, risk management, strategies, and 2 years later I started getting some traction. 2 years लगे हैं. 2 years में slowly, I got better at trading, and then now it's 10 years now. Yep, and in this 10 years you have made more than 150 crores and so many things. ये 2 साल में आपने ऐसा क्या किया? आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, आपने कोई बुक पढ़ना चालू किया, आपने कुछ YouTube से सीखा? How you learned? Like you are also a beginner, right? Yeah. Nobody was there. Like a lot of people are watching us, they have no one, only YouTube today. So how you learn trading? So in 2012 YouTube में इतनी चीज़ें नहीं थी trading के बारे में. आज में बहुत चीज़ें हैं. Like you can go on YouTube, go on your stuff, you have amazing content, you have amazing education. So in 2012 there wasn't a lot of stuff. There was very minimal education on YouTube, very minimal guidance. So for me it was a lot of trial and error. कि ये try करना है, वो try करना है, ये fail हुआ है, वो fail हुआ है. So I never had one mentor. मेरा एक mentor नहीं था, मेरे पास क्या ले 100 different mentors थे. From books, from videos, from everything combined, they were my mentors. So I took a piece of everything and I put it together, and as I got comfortable, that's where I was like, okay, well now I have some sort of edge. कि एक edge है market में, कि ये edge को follow करना है, इस edge को ये follow नहीं करना है. And then the biggest thing for me was trading में मैंने realize किया कि it's not the market that's hard, it's yourself.
मास्टरिंग योरसेल्फ, योर साइकोलॉजी, कि जब आप ट्रेड के अंदर हैं आपका फियर कैसे आता है, आप ग्रीडी हो जाते हैं कि आपने और पैसे बनाने हैं, ज़्यादा थोड़े पैसे बनाने हैं, आप स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते, तो वो सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, मैनेजिंग इमोशंस, ये सबसे मुश्किल पार्ट थी इन द फर्स्ट 2 years, and I worked on this a lot. I got really comfortable with it, and then that's where my progress started getting better. ओके, सो यू सेड द वर्ड एज. एज का मतलब क्या होता है गाइस? एज का मतलब होता है हमारे पास कुछ एडवांटेज हो, Yes. हमारे पास कुछ एक बेटर हो. लाइक मतलब मेरे पास एक एज है, मतलब मेरे पास कुछ लेट्स से स्ट्रैटेजी है या कुछ है. तो लेट्स से इन 2 सालों में आपने अपना एज ढूंढा, यू गॉट योर एज, सो इट वर्कड, यू स्टार्टेड मेकिंग मनी इन आफ्टर 2 years. Yeah, so 2 years. So one thing, जो मेरा एज उस वक्त था और जो मेरा एज अब है, it switched a lot. Okay. Because the market switched a lot. So 2014-15 से आज market has went through multiple different cycles. So जो उस वक्त काम कर रहा था वो अब काम नहीं कर रहा. So Okay. I had to adapt to the market. So it took me 2 years, 2.5 years to get a little consistent. I didn't start making a lot of money until year 4. Year 4, 5 is when I started making a lot of money, and year 6, 7 is when it just compounded to even more. A lot of beginners are watching this video. Sure. Beginning stages की बात करते हैं, लाइक स्पेशली जब कोरोना वगैरह आया था, तो लाइक आई वांट टू नो इन योर स्टोरी व्हाट आर द डेज यू रिमेंबर. लाइक बहुत बड़ा कोई लॉस हुआ होगा, सबको होता है. प्रॉफिट तो आपको होगा, बाद प्रॉफिट भी हुआ आपको, सबको प्रॉफिट नहीं हुआ है, बड़ा प्रॉफिट. लॉस सबको हुआ है, ये कॉमन है हम सब लोगों के बीच में. शेयर वन स्टोरी लाइक व्हेन यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट बट आपको लॉस मिला, कैसे कट किया. माइंडसेट बहुत खराब हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है बहुत सारे लोगों को. कैसे कम बैक किया? लाइक कैन वी जस्ट गेट अ स्टोरी अबाउट लॉस? हाँ मैन, लॉसेस लॉस बहुत हुए हैं. तो लोग देखते हैं कि इतने पैसे बने हैं, लोग ये नहीं देखते कि उसके पीछे क्या था. उसके पीछे बहुत ज़्यादा लॉसेस थे. तो एक थिंग मैंने शेयर करनी है, जो लॉसेस हैं इट डिपेंड्स कि आप लॉसेस को मैनेज कैसे करते हैं. हार्ड ट्रेडर के पास लॉस होने हैं, नो मैटर आप सबसे बेस्ट ट्रेडर हैं, जो मर्जी है, लॉसेस 100% होने हैं. ये है कि आप उस लॉसेस को मैनेज कैसे करते हैं और उस लॉसेस से आगे कैसे मूव होते हैं. तो मेरा सबसे जो वर्स्ट लॉस था ऑलमोस्ट $500,000 था. $500,000, 4 करोड़ के आसपास का लॉस था. Yeah. 4 करोड़, ठीक है, 4 करोड़ बेसिकली, राइट. इन 2020 मैंने मार्केट शॉर्ट की थी. जब कोविड हो रहा था, फरवरी में मैंने मार्केट शॉर्ट की थी और मार्केट नीचे जा रही थी. और जब मार्केट और नीचे जा रही थी, मैंने और शॉर्ट किया. फिर क्या हुआ, मार्च में फेड्स आए हैं, उन्होंने मार्केट को लिक्विडिटी दिया और मार्केट एकदम मार्च में ऊपर गया. जब मार्केट ऊपर जा रही थी, मुझे अपनी पोजीशन क्लोज करनी चाहिए थी. करेक्ट. मैंने क्लोज नहीं की थी, मैंने और पोजीशन पे डबल डाउन किया. इतना किया कि ऑलमोस्ट $500,000 उस पोजीशन में पूरा गया. बिकॉज मैंने अपने इमोशंस को उस ट्रेड से सेपरेट नहीं किया. मैंने कहा ये ट्रेड है, इसमें मैं शॉर्ट हूँ, मैंने पब्लिकली पोस्ट किया हुआ है, लोग फॉलो कर रहे हैं, ये नीचे जानी है. तो ईगो अंदर आया है, इमोशंस अंदर आए हैं और वो लॉस फिर it's a terrible loss. I agree with this because मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था 2020 में, बट मुझे खुद लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा ही नहीं सकता इतना गिरने के बाद. सब कुछ वर्ल्ड में मेरे पास एक्सपीरियंस कम था and you had experience as well because I believe in experience as well. You won't see something like of course not that kind of V-shaped recovery, right? Yeah. किसी ने नहीं सोचा था कि V-shaped recovery होनी. Yeah, so with you it was experience and expectations. And we all were having only expectation, but you had experience as well. In the moment बहुत बुरा फील हुआ है. इससे मैंने पब्लिकली ट्रेड पोस्ट की थी, तो लोगों ने फॉलो भी किया और लोगों ने मे भी पैसे लूज़ किए थे. सो दैट हर्ट मी मोर. और उसके जो आगे मैंने 3-4 ट्रेड दी थी. एवरी ट्रेड जो मैंने आगे ली थी रेड हार्ड ट्रेड रॉन्ग. क्यों से वो जो ट्रेड का इतना ज़्यादा लॉस हुआ था, मेंटली मैंने कहा आई वांट टू रिकवर इट, ये मैंने पैसे वापस बनाने हैं. तो मैं वो फिर पैसे वापस बनाने की कोशिश कर रहा था नेक्स्ट मंथ. तो उसकी वजह से जो हार्ड ट्रेड आगे ले रहा था, लूजिंग ट्रेड्स हो रही थी. तो उस वक्त फिर मैंने ब्रेक लिया वो 2 months की, कि मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा 2 months के लिए. I'm going to step away, I'm going to relax and I'm going to work on myself to kind of separate from this problem. इसे प्रॉब्लम ये थी कि मेरा 500,000 लॉस है, अब मैं इस लॉस को वापस कैसे बना सकता हूँ. और ये एक प्रॉब्लम होती है बहुत ट्रेडर्स के साथ, वो पैसे लूज़ करते हैं एंड वो रियलाइज़ नहीं करते कि ये अब जो पैसे लूज़ किए हैं वो मेंटली वो पैसे वापस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और जब वो पैसे वापस बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, बैड ट्रेड्स, स्टूपिड ट्रेड्स, और उनके पास कोई एज नहीं होता, बैड रिस्क मैनेजमेंट, एंड $10,000 लूज़ करने के बाद 10 और लूज़ होते हैं. तो उस टाइम पे मैंने जो चेक किया, आई स्टेप्ड अवे.
और जैसे उमर की स्टोरी है, हम लोग भी उसी लॉस को इतना बड़ा मान लेते हैं कि सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। वी नेवर फोकस ऑन मेकिंग सम मोर प्रॉफिट्स, कि बस ये रिकवर हो जाए, और उसको रिकवर चक्कर में हम लोग का और लॉस होता है। तो ऑल राइट, मतलब देखो गाइस, आपके साथ भी ऐसी स्टोरी होती है, मेरे साथ भी हुई है, सबके साथ होती है। सो अब उसको रिकवर कैसे किया? लाइक यू टोल्ड अस दैट यू टुक अ ब्रेक। तो उस ब्रेक में क्या हुआ, क्या किया, और जब ब्रेक खत्म हुआ तो वर यू फुल्ली मोटिवेटेड? हाउ वाज लाइक? तो उस ब्रेक में मैंने क्या किया, आई जर्नल अ लॉट। जर्नल के ये मैंने लॉस इतनी पोजीशन क्यों लिया, जब इतनी पोजीशन लिया मैंने इस पोजीशन के फैक्ट्स क्या थे, जो रियल फैक्ट्स थे इस पोजीशन के, मैंने क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या मिस किया। मैंने जब वो अंडरस्टैंड किया, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लिया कि ये लॉस मेरी फॉल्ट है, मार्केट का फॉल्ट नहीं है, किसी और का फॉल्ट नहीं है, मेरा फॉल्ट है। मैंने इतनी बड़ी पोजीशन लिया, मैंने पोजीशन को मैनेज ठीक नहीं किया, अब लॉस हो गया, अब आगे कैसे जाना है? अब आगे ऐसे जाना है कि आगे का मेरा गोल ये है कि ये पैसे मैंने वापस नहीं बनाने, मैंने सिर्फ आगे वो ट्रेड करना है जो मार्केट मुझे देती है। अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है उसको ट्रेड करना है, अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देती तो फिर मैंने ट्रेड नहीं करना। तो उस माइंडसेट के साथ और इस माइंडसेट के साथ कि उस लॉस को like you have to forget about it, you have to leave that loss in the past, वो करके मैंने स्लोली अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। वैसे पहली चीज़ ये होता है, जब बिग लॉस होता है आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है कि आप कहते हैं यार मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मुझे ट्रेडिंग की समझ है, अगर फिर इतना बड़ा लॉस हुआ मैं पैसे बना सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें मेंटली बंदे को ना होल्ड डाउन करती हैं। तो वो फर्स्ट मंथ आई बिल्ड अप माई कॉन्फिडेंस, और जब कॉन्फिडेंस बना था मैंने एक दो सेटअप्स के ऊपर फोकस किया है। ये मेरे एक दो सेटअप्स हैं, ये एक दो स्ट्रैटेजीज़ हैं, इस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर फोकस करना है, और इसके अलावा मैं कोई और स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। मैं मैक्सिमम 2 ट्रेड्स ले सकता हूँ एक दिन में, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं। तो मैं अपनी ट्रेड काउंट को लिमिट कर रहा था, मैं अपने रिस्क टॉलरेंस को भी लिमिट कर रहा था। तो इसकी वजह से ये हो रहा था कि मैं ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ले सकता हूँ, हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी, और हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी जो ले रहा हूँ वो ले के मैं उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सो यू डोंट गो ऑन टिल्ट के हर जगह आज ये ट्रेड किया है, कल वो ट्रेड किया है, 10 ट्रेड्स लिए हैं, 20 ट्रेड्स लिए हैं, आपके ट्रेडिंग फिर डिसिप्लिन हो जाती है। तो डिसिप्लिन करके स्लोली बिल्ड अप कॉन्फिडेंस, एंड देन फ्रॉम कॉन्फिडेंस यू नो आई गॉट मोर कंफर्टेबल। Okay, so you limited your trades to 2 trades a day. Yes. Before that, how many trades you were taking? I still take like 3-4 trades, right? Not now, like that time. Oh, at that time I was taking maybe like 6 to 10 trades a day. 6 to 10 trades. 6 to 10 trades a day. Now I probably take 2, maybe 3 trades. I've cut it down a lot. At that time in 2020, I was 6, 10, some days like 15, 20. But I've learned, with my strategy and my trading style, I learned that the best thing is to identify high quality setups once or twice a day, go in with good size and execute that. So taking breaks is a very important thing after a losing streak, I believe. Taking breaks, and then in those breaks you should work upon journalizing. राइट, जर्नलाइजिंग कि मैंने क्या किया, और सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशनल एक अपने आप को बेटर करना कि मेरी गलती थी, एक्सेप्ट करना चीजों को ताकि यू फील रिलैक्स्ड, एंड देन एक प्लान बनाना, अगर आप कितने ट्रेड्स लेंगे, सारी चीजें, और एक प्लान को लेकर के काम करना, राइट? चलो ठीक है, अब लाइक वी नाउ नो योर लॉस मेकिंग स्टोरी। व्हाट अबाउट योर बिगेस्ट प्रॉफिट? लाइक व्हाट हैपेंड? लाइक आई होप आपको वीडियो देखने में बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत नॉलेज मिल रहा होगा, लेकिन अब मेरे पास एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है आपके लिए। मैं आ रहा हूं इंडिया टूर पे, इन सारी सिटीज में मैं आने वाला हूं गाइस। तो क्यों आने वाला हूं मैं आपको बताता हूं यार। आपकी सिटी में, आपके एरिया में, आपके कॉलोनी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे ज्यादा रिच होंगे, कुछ आपसे थोड़े ज्यादा पुअर होंगे, कुछ आपसे ज्यादा हैप्पी होंगे, कुछ आपसे ज्यादा डिप्रेस्ड होंगे। कभी सोचा आपने क्या डिफरेंस है इन लोगों में, आप में और उन लोगों में? द आंसर इज साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? सोच, देखो 2 बिजनेसमैन होते हैं, कंप्यूटर की दुकान खोलने के लिए 2 गांव जाते हैं। एक बंदा देखता है इस गांव में तो बहुत ज्यादा बैकवर्ड गांव है, कोई कंप्यूटर यूज ही नहीं करता, मोबाइल भी कम लोग यूज कर रहे हैं। दोनों अपने पार्टनर्स को कॉल करते हैं। एक बंदा कहता है भाई यहां तो बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, यहां तो कोई कंप्यूटर खरीदेगा ही नहीं क्योंकि यहां तो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, मोबाइल भी यूज नहीं करते, मैं वापस आ रहा हूं। दूसरा बंदा कहता है अपने पार्टनर को भाई अपॉर्चुनिटी है, एक भी बंदे के पास लैपटॉप नहीं, हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी, ट्रेनिंग्स देनी होगी, समझाना होगा, मेहनत करेंगे लेकिन हमारी कंपनी सक्सेसफुल होगी। तो आपको पता है इन दोनों में कौन सक्सेसफुल होगा? जो बंदा ट्राई करता है। ये क्या था? गांव वही, लोग, इंसान भी वही, डिफरेंस कहता है सोचने का तरीका। देयर इज अ वे, एक पैटर्न होता है जो मिलियनेयर्स की सोच में डिफरेंस होता है। तो क्या है ना, टॉप 1% कैसा सोचता है? एक प्रोग्राम मैंने बनाया जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ अ
हैप्पी मिलियनेयर। यानी एक मिलियनेयर की सोच पैटर्न क्या होता है कि वो सुबह उठ के किस तरीके के पैटर्न्स को फॉलो करता है, सोने के पहले क्या करता है, वो मेडिटेशन करता है तो कौन सा मेडिटेशन करता है, किस तरीके से अपने रूटीन को मैनेज करता है, अपने आसपास के लोगों से रिलेशन कैसे मेंटेन करता है, क्या है उसका वेल्थ माइंडसेट, वो किस तरीके से पैसे को अट्रैक्ट कर रहा है। एक 4 आवर का वर्कशॉप बनाया मैंने, जो मैं आपको इन सिटीज में इस तारीख को मिलूंगा। तो गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड। वैसे भी मुझसे मिलने का अगर मन था आपका, मुझसे 1 मिनट मिलकर क्या करोगे, मेरे से एक मिनट पूछोगे कैसा दिन गया आपका, ये पूछोगे। उससे अच्छा जब हम मिलेंगे और एक कन्वर्सेशन करेंगे लंबा, कि इसमें आप मेडिटेशन मेरे साथ करोगे, इसमें मेरे साथ Q&A करोगे, इसमें मेरे साथ मैं पूरा जो प्रोग्राम मैंने 15 साल के लाइफ में जर्नी में मेरे इतने लोगों से मैं मिला हूं, इतनी बुक्स पढ़ी, इन सारी चीजों से मैंने जो सीखा है एक 4 आवर वर्कशॉप में मैं डिलीवर कर सकता हूं आपको। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, क्लिक करना लिंक पे, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, पढ़ लो अच्छे से, ब्रोशर वगैरह मंगा लो टीम से बात करके। और अगर आप चाहते हो तो अपनी सीट बुक कर लो, क्योंकि लिमिटेड इवेंट है, ऑफलाइन है, समझ रहे हो ना, हाइब्रिड सेंटर में कर रहा हूं मैं मेरे, तो लिमिटेड रहेगी, तो ये बहुत जल्दी फिल होने वाली। तो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द लिंक एंड तुरंत नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप डिटेल ले सकते हो। सो इफ यू वांट टू मीट मी, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। व्हाट वाज द सेटअप, लाइक डू यू रिमेंबर, आई बिलीव यू रिमेंबर योर बिगेस्ट प्रॉफिट्स ऑलवेज, so can you share something So about that? my biggest month that I had, 2 back-to-back months, was in 2021. August and September 2021, I made 1.1 and 1.2 million that month. My big trade was a firm. I made, I think, $800,000 or $900,000. AFRM. Yes. Yeah. हाँ, I Checked posted on it. हाँ, मैंने Instagram, post किया था, सब किया था। मैंने post किया था, trade लेने से पहले मैंने post किया था, ये मैं trade लिया है। तो उस trade में about $900,000 बने थे। और that month, $1.1 million, and the next month, $1.2 million about. Trading के साथ जब पैसे बनते हैं, lose होते हैं, मेरे पास एक mindset है कि think about your next 100 trades. तो अगर आपका लॉस हुआ है, think about the next 100 trades. If अगर पैसे बने हैं, think about your next 100 trades. Why? Because ये होता है कि जब बंदे के पैसे बनते हैं ट्रेडिंग में, he gets excited. Oh my God, मेरे इतने पैसे बने हैं, मैंने इतना अच्छा किया है। वैसे ये जो आज पैसे बने हैं, next 100 trades में वापस जा सकते हैं। जो आज पैसे लूज़ हुए हैं, नेक्स्ट 100 ट्रेड्स में वापस आ सकते हैं। सो उस माइंडसेट के साथ क्या होता है कि बंदा ग्राउंडेड होता है, बंदा लेवल हेडेड होता है, बंदा आगे का नहीं सोचता अग्रेसिवली कि यार आई एम सो गुड एट ट्रेडिंग, आई एम द किंग और व्हाटएवर। इट्स लाइक ओके, मेरे इतने पैसे बने हैं, ठीक है, अब मैंने फोकस रहना है। आई वांट टू डू इट अगेन, आई वांट टू डू इट अगेन, आई वांट टू स्टे फोकस्ड कि मैं अपने इमोशंस को या साइकोलॉजी को ऑल ओवर द प्लेस ना जाए। ऑलराइट, सो ट्रेडिंग इस वक्त बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है। आई मीन यू नो लाइक कितने हाँ, बहुत ज़्यादा अभी मैसेजेस कितने आ रहे हैं, लोग हर कोई आज की डेट में ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, हर कोई कर रहा है और लोग बढ़ने वाले हैं करने के लिए। तो आई वांट यू टू शेयर विद ऑल ऑफ द पीपल ट्रेडिंग का सीक्रेट क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस दैट इफ यू डू दिस स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, you will succeed. Yes. What is that path? Because let me share with you, the path people are following today is watching some video, opening account, depositing money, taking random trade, losing money, becoming angry, again taking trade, then joining some Telegram channel, Yes. Telegram channel calls and frustration at peak, don't want to learn, don't want to get educated, just recovery and finish, the career is finished. Yeah. Gambling बढ़ गई और. Yeah. So this is what people are doing. This is what, so what Yeah, a lot is of the people, right yeah. process? प्रॉब्लम ये है कि जब बंदा ट्रेडिंग में शुरू होता है, उसका पहला गोल ये है कि मैंने कल पैसे बनाने हैं, मैंने नेक्स्ट मंथ पैसे बनाने हैं। आपका पहले गोल होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर में आई वांट टू बिकम गुड। व्हाट डज गुड मीन? आई वांट टू हैव एन एज, कि मेरा एज क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को परफेक्ट किया या नहीं किया, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंड है या नहीं, मुझे पता है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी कब देगी या नहीं, राइट। देन द सेकंड पार्ट बिसाइड्स टेक्निकल इज़ इमोशनल, कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं जब आपका लूजिंग डे होए, आप कैसे रिएक्ट करते हैं जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाए, आप कैसे रिएक्ट करते हैं जब ट्रेड स्टॉप लॉस पे जाए, आप कैसे रिएक्ट करते हैं जब ट्रेड आपकी क्या ले टेक प्रॉफिट पे जाए, आप इन चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट योरसेल्फ। फिर जो भी आपके क्या लें इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं ट्रेडिंग में, यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर कि उस प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं। इस ट्रेडिंग में ये है कि आप इमोशंस को लिमिनेट नहीं कर सकते। लोग ये समझते हैं आप इमोशंस को लिमिनेट करना चाहिए। हम ह्यूमंस अपने इमोशंस को नहीं अरेज कर सकते नो मैटर व्हाट। वैसे हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। ये मेरा इमोशन है, आई फील एंग्री, मैं क्या कर सकता हूँ कि इस इमोशन को मैनेज करने। सो द डेज आई फील अपसेट, एंग्री और आई फील फोमो, मैं अपना डेज को ऐसे स्ट्रक्चर करता हूँ कि लेस रिस्क, लेस ट्रेड्स, पीरियड, मे बी वन ट्रेड, नो मोर देन वन ट्रेड। आज मैं फोमो फील कर रहा हूँ, इसका मतलब है मेरी रिस्क अगर $5,000 है, मेरी रिस्क $2,000 रहेगी, एंड आई कैन ट्रेड मोर देन वन ट्रेड, period. Now I have a structure
और उस स्ट्रक्चर के साथ मैं वो चीज़ें रिड्यूस करता हूँ. तो those are the two elements, the technical psychology aspect, and इन दोनों को you have to work on them together with a longer goal. That एक साल में या 2 साल में मेरा goal नहीं है पैसे बनाना, especially the first year. First year I'm not looking to make money, I just want to get good. I want to get good at this craft. I just want to get good at trading year 1, and then you focus on the money. Trading जो एक career है, ठीक है, एक high level professional career है. तो अगर आप देखें डॉक्टर, राइट, अकाउंटेंट, लॉयर, जो भी एक प्रोफेशन है, कोई भी बंदा कल उस प्रोफेशन में जाके पैसे नहीं बना सकता. यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस, यू हैव टू हैव द नॉलेज, यू हैव टू हैव समथिंग इन दैट फील्ड टू मेक मनी और टू बी प्रॉफिटेबल, राइट. ट्रेडिंग की प्रॉब्लम ये है कि कल कोई भी बंदा पैसे डाल के अकाउंट खोल सकता है, एंड दे आर लेबल्ड एज अ ट्रेडर, और उसकी वजह से दे हैव अ हाई एक्सपेक्टेशन टू मेक मनी. ना अगर समझे हार्ड बंदा अगर कल सर्जरी कर सकता है, राइट, सेम कॉन्सेप्ट. अकाउंट खोलें, आप किसी के ऊपर सर्जरी कर सकते हैं, कितने लोग पास होंगे. जितनी भी आप बुक्स पढ़ें, जितनी भी आप वीडियोस देखें, आप उस वक्त सर्जरी कर सकते हैं जब आपके पास रियल एक्सपीरियंस है. आप रूम में देख रहे हैं सर्जरी कैसे हो रही है, एक्सपीरियंस आ रही है. वो एक्सपीरियंस होती है जब आप रियल ट्रेडिंग करते हैं. तो वो रियल ट्रेडिंग अगर आप 6 मंथ्स दें, 1 ईयर टाइम दें, और उसको आप क्या लें, परफेक्ट करें, आपके पैसे बन सकते हैं. वैसे उस टाइम पे ये एक माइंड सेट है जो लोग सोचते हैं, आई नीड टू मेक क्विक मनी, क्विक मनी, क्विक मनी. क्विक मनी डजंट एग्जिस्ट. तो वही फीलिंग है भाई, कोई कितना भी स्मार्ट हो, जब वो लॉस करेगा ना, तो जो बुरा लगेगा, और बुरा लग के वो कंट्रोल कर पाएगा कि अपने आप को, कि मैं उसको तुरंत रिवेंज ट्रेडिंग ना करूं, वो थ्योरी में पॉसिबल नहीं है. नहीं. जब तक नहीं करोगे नहीं जानोगे. करेक्ट. जब एक प्रॉफिट होगा तो जो ईगो बर्स्ट, वाओ आई एम द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड, इसका डबल पूरा अभी ट्रेड लगा दो, पूरा पोजीशन साइजिंग बढ़ा दो. वो जब लॉस होगा तो रियलाइज होगा, अरे ये मेरे को नहीं करना था. तो ये जो चीज होती है, जब तक एक्सपीरियंस ना करो तब तक नहीं समझ सकते, चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, चाहे आईटी रैंक नंबर 1 हो आप ऑल ओवर इंडिया में, राइट. No, I agree. It's about experiencing I things. agree. And emotions. Yeah. It's all about emotions. And the only way you can experience this is when you trade. जब trade करते हैं, and वो experience can take 2 months, 3 months, 4 months. I've been trading for 10 years, और 10 साल में अभी भी मेरे emotional problems कभी बाहर आते हैं, right? मैं trade करता हूँ, जिस अगले दिन मैंने trade किया. First trade I made $48,000, and then right after I had 6 losing trades. I overtraded. This is me, मैं 10 साल के लिए trade कर रहा हूँ, अभी भी like I have those problems, but I'm able to manage it and get myself out of it, right? Because I have the structure, mental structure to get out of it. Okay. So these problems will keep happening no matter what. Your personal life has to be in top shape. You have to be going to the gym, have to be taking care of your sleep, right? You have to be having your personal life, the stress has to be reduced. Okay. Right? बहुत traders को ये समझ नहीं है, जो आपकी personal life है, personal life trading के अंदर bleed होती है, no matter what. तो अगर आपकी personal life ठीक नहीं है, बहुत stress है, बहुत problems हो रहे हैं, आप randomly laptop, computer open करके trading नहीं कर सकते. Your mind is not at a good place. Trading is all mental. So you have to make sure your mental is at top notch, right? Meditation. I always talk meditation is big. Meditate, right? Get proper sleep, get proper food, right? Get proper rest, get proper exercise to keep this at the top level of performance. If this is at a top level of performance, your trading will automatically do well. सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर ट्रेडिंग में कुछ है तो जर्नलाइजिंग है, कि रियल मार्केट में क्या हुआ. क्या है ना, आपको याद है कि आपने, सिंपल एग्जांपल है, कल सुबह क्या खाया था नाश्ते में? Do you remember what you had in breakfast today? Yeah, I remember. But what about 3 days back? You remember? I don't know. No one remembers? Yeah. कि आपने 2 दिन 3 दिन पहले, तो ट्रेड जो 3 दिन पहले लिया उसमें क्या हुआ कहां से याद रहेगा? Exactly. Until you write it down, yes. or use some software like Tradezilla to track your trades, or simple diary, pen paper, एकदम without. जब तक आप जर्नल नहीं करोगे, अब आपको याद है. Now let's say today's weekend we are sitting here. अभी we can go back and track our trades. Yes. कि क्या सही किया, क्या गलत किया. जो सही किया बढ़ाना है, जो गलत किया गिराना है. This is the simple thing that he explained us. Journaling is so important. All right. So, and you told us about meditation, workout. So, I believe, let's say there are 2 kinds of people. एक जिसको ट्रेडिंग का अभी टेक्निकल क्लियर नहीं है, एक को टेक्निकल क्लियर है, ठीक है. तो इसको तो टेक्निकल भी पढ़ना है और इसको टेक्निकल नहीं पढ़ना है, इसको जस्ट अप्लाई करना है. इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं लाइफ मैनेजमेंट हो गया, राइट? Yes, 100%. Right? Life management is very important. This is the most important thing. Yes, because if for me, मेरी trading also has improved जब my personal life got better, sleeping got better, right? My vision of what I want got better, right? Me going to the gym, me feeling clear, me writing down my thoughts, my emotions, my process, right? These things helped
with my trading. They helped elevate my trading. Okay. तो बहुत लोग ये नहीं समझते हैं कि personal life means nothing. No, your personal life will bleed into your trading, like I mentioned. So everyone should focus on it. Yep. Yeah. All right. So let's talk about you, Umar. What is your trading style? Like you trade intraday, you trade scalping, you do swing trading. What exactly you do? So I intraday and I scalp. So swings, I have swings too. So swing trading for me and intraday and scalping are two different trading, Exactly. which it is, right? So when I journal them differently. When I have accounts, I have two different accounts. I don't keep them in one For account. accounts also? Yeah, Okay. accounts I keep it separate because they're two different They're formats. very different right? things, yeah. So journal them differently. I break them up, but majority of my trading is intraday and scalping, right? I look for quick opportunities के market में imbalance कहाँ है, strength कहाँ है, buyers में ज़्यादा strength है, sellers में ज़्यादा strength है, इस time पे market कौन control कर रहा है, और उसके हिसाब से I take a trade. So there is a traditional way of drawing horizontal levels or trend levels or finding EMAs on a higher time frame, then shifting down to a smaller time frame, Yes. finding few patterns, some chart patterns, some support resistance, some areas, and then executing on a small time Yes. frame. So what are those time frames for you? And do you also draw lines, trend lines, horizontal lines? Which time frame you use for that, and which time frame you use to execute? Sure. So I work from a higher time frame, let's say a year daily time frame, to let's say a 30-minute to a 15-minute. I break down my levels of understanding where's supply, where's demand, and then I'll go into a 1 and a 5 minute to execute. 1 and 5 minutes to execute. Yes. Okay. I focus a lot on the 5 minute to understand what is happening, but the 1 minute just to get a feel of what is happening on like an intraday session, right? Okay. I don't think beginners should look at a 1 minute because 1 minute for some beginners will make their emotions go everywhere because 1 minute candle, goes up and down, goes up and down, goes up and down, right? So for me, it's like 1 minute and 5 minute. I look at those in conjunction with the tape. I look at the tape a lot, right? Tape means? Tape on every order that's executed. कि जो भी order market में आ रहा है, उस market में जो order आ रहा है ज़्यादा strong है या weak है? मतलब buyers ज़्यादा aggressive हैं या sellers ज़्यादा aggressive हैं? Market में कौन control कर रहा है? So for example, अगर एक support level है और अगर stock support level पे आ रहा है, अब ये क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता लगेगा सपोर्ट लेवल से बाउंस होएगा या सपोर्ट लेवल से नीचे जाएगा. उसके साथ मैं यूज़ करता हूँ टेप, राइट? टेप ऑर्डर फ्लो कि देखता हूँ कि ठीक है अब हम सपोर्ट पे आ गए हैं, सपोर्ट $10 पे है, $10 पे अब बायर्स कंट्रोल में हैं या नहीं, बायर्स इधर प्रेजेंट हैं या नहीं, उसके साथ रीडिंग करके आई एग्जीक्यूट माई ट्रेड्स. Alright, तो order flow आपने जो word use किया, order flow means like in my opinion till now, like it's like a detailed level 2 or level 3 area of where you can Yes. you have knowledge of all the orders Yes. on buying and sell side. Correct. Which market orders are not visible till now. Only limit orders are visible. Market orders too. So market orders visible, it shows market and limit. Correct. Market So after level- executing. Yes. After executing. After executing, yeah. So Okay. level 2 will show us the limit orders. The tape will show us every order, market and limit. Okay. Right? So on the tape, क्या ले अगर सोचे अगर आईफोन है, ठीक है, अगर एक आईफोन $1,000 का बिक रहा है, ठीक है, अगर $1,000 की प्राइस है, एक तरफ बायर्स हैं, एक तरफ सेलर्स हैं. बायर्स कह रहे हैं हमने आईफोन को $900 का बाई करना है, सेलर्स कह रहे हैं हमने $1,100 पे सेल करना है. Correct. डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर कहाँ जाता है आपको पता होता है कौन स्ट्रांग है. अगर आईफोन $1,100 पे सेल होता है, इसका मतलब है जो बायर्स हैं वो अग्रेसिव हैं, वो जो मर्जी है कह रहे हैं हमें आईफोन चाहिए, हम $1,100 पे करेंगे, हम $1,200 पे करेंगे, जितना भी है आईफोन की प्राइस ऊपर जाएगी. Okay. अब अगर सेलर्स 1100 पे हैं, बायर्स 900 पे है, और जो बायर्स हैं वो सेलर्स के पैसे नहीं दे रहे, कह रहे हैं हमने 1100 नहीं पे करना है, हमने 900 पे करना है. Okay. इसका भी ये मतलब है जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव हैं, वो बेच रहे हैं, जो भी उनको पैसे मिलते हैं आईफोन के लिए वो बेच रहे हैं. तो वो बेसिकली ऑर्डर फ्लो है जो हम रीड करते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है उस मोमेंट में, बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है. वो रीड करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब अगर एक स्टॉक सपोर्ट पे आ रहा है, सपोर्ट से बाउंस होएगा या सपोर्ट के नीचे जाएगा. Support टूटेगा. Yeah. So which website you use to track this? I have Sierra charts and I have ATAS. Okay, I believe these works in US market, but in Indian market, there's a website called Go Charting. Okay. In Go Charting, we can see this order flow, max delta, minimum Yes, delta, yes. delta, Yeah. and full structure. Yes. So, guys, if you are interested, अगर आप अभी comment करते हो order flow, जिस ये word order flow, अगर comment आते हैं order flow, तो we will request Umar
let's make one more video in your office. You Okay. also made a congratulations for your own you. trading flow. Thank you. Black line trading. He's about to start it. So soon you will get the information from Umar itself. और also मैं इनका चैनल मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. का चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर ऑर्डर फ्लो आप कमेंट करते हैं तो we'll make one more video जहां पे उमर will teach me order flow. Okay, we'll sit like this. Perfect. In laptop, you'll explain me. By you explaining me, they'll also understand, right? Okay. Maybe this is for US market, but नई चीज सीखने से benefit ही है. Of course. And I believe go charting में हम लोग वो भी देख सकते हैं. हाँ गोल्ड चार्टिंग में है मैंने देखा है गोल्ड चार्टिंग इंडिया में बहुत बड़ा है तो yes, so maybe it will be very beneficial for all the subscribers, I believe. ठीक है? तो let's see if we get like 2,000 comments, more than 2,000 Let's comments. go more than 2,000. More than 2,000 comments. We'll go ahead and make one more video with an Umar's trading floor. All right? Okay. ठीक है, great. I do want to share one thing. Because I use order flow doesn't mean that's the only way to trade. Right. ऐसे लोग ये समझते हैं ये बंदा ऐसे trade करता है यही है ये बंदा ऐसे trade करता है यही है. No, there's a million different ways to trade. Correct. It's people's jobs to find a way they like and that works for them and maximize it. Just because I trade a certain way doesn't make it the only way. ये एक चीज़ है बहुत लोग ये इंटरव्यू भी देखेंगे बोलेंगे ये ऐसे ट्रेड करता है ये ऐसे करता है ये सही है ये no. Every way is different and every way works as long as it makes money. I agree. Right? So that's my approach. Yeah. All right, so there are two things in the market, win size and win rate. Yes. People having low win rate are making huge money because they have big win size. Yes. Right? And people having good win rate are also making money. Yes. So there are two kinds of things. Now, Sure. there are a category of traders who are Yes. talking about 1:1. We'll make a lot of money. And there are some traders who are saying, don't focus on win rate. Don't go for a high win rate strategy. Go for a high win size strategy, Yes. which means risk reward ratio. Yes. What is your take on it? And what do you do? For me, I care more about my risk reward ratio. For me, right? I don't. That means win size. Win size. Yeah, I care about my win size. I care to have my win size to be 2 to 3 times more than my losing size. 1:2, 1:3. Yeah. So that's what I care more about because based on my strategy, I'd rather take less trades. I don't care about being wrong. I care about making a lot of money when I'm right, and when I'm wrong, I lose a little bit of money. That's Okay. my focus. So if I can have a 40% win rate, which I do sometimes, I still make a lot of money. Because when I'm right, my profits are 2 to 3 to 4 times larger than my losses. So you are saying that sometimes you have 40% win rate and you still make a lot of money. Yeah. Because when you think about it, right? If you have a 50% win rate, you need to make 2 times what you lose to be break even, right? Now, if you have a 40% win rate, and if you make 3 times what you lose, like in terms of profit to loss ratio, right, you're going to be profitable. Right. So if you have a 3 to 1 profit to loss ratio and you have a 40% win rate, you're still going to make money. I agree. And know? I'm so happy that we brought it up. Yeah. Because people will like 40% win rate. इससे अच्छा ट्रेडर तो मैं हूं. People might think like that, but it's so immature. That is so immature. It doesn't matter. This is real talk, guys. This is real practical talk. जहाँ पे कोई polish करके नहीं कि मेरा 80% win rate है, 90% win rate है मेरा. He's saying कि sometimes, not all the month, obviously sometimes he's having a great win rate, like 65%, Yeah. 70%. I see in your TradeZilla score as yeah. well. Sometimes that 65% win rate, you Yeah, have that in monthly. But 40% हो के भी बंदा कमा रहा है. So this is most important that you stop chasing strategies for 90% win rate, 80% win rate. If you have a strategy जो कभी कभी लॉस देती है उसको हम कहते हैं गुड लॉस. Yes. और Yes. गुड लॉस बहुत ही नॉर्मल चीज है. लोग क्या होता है गुड लॉस होते ही ना स्ट्रैटेजी बदल लेते हैं और फिर वो ये वाली काम कर जाती है तो फिर वापस आते हैं तो फिर लॉस हो जाता है. तो दिस इज हैपनिंग अ लॉट. दैट्स व्हाई अच्छा हो बुरा हो एक बार आपका एज मिल गया, स्ट्रैटेजी मिल गई, आप उसको लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूट करो एंड देन यू मेक मनी, राइट? Yes. So according to you, win size is more important than Way win more rate. important. Way more important. मैंने लोग देखे हैं जिनका win percentage 80% है, but they're not profitable. I have a lot of, You know? My new friends have started trading. उन लोग मेरे को दिखाते हैं कि ये देख भाई $50 प्रॉफिट, $60 प्रॉफिट, $28 प्रॉफिट, $78, क्या बात है, ग्रीन Or $700 loss. $1900. Yeah. सीधे जिस दोस्त के बारे में बता रहा हूँ ये वीडियो देख रहा होगा, कोई बात नहीं भाई, $1900 लॉस सीधे. चलो कोई नहीं, बट दिस हैपेंस बिकॉज दे हैव हाई विन रेट स्ट्रैटेजी Yes. बट लो विन साइज. Yes. That is the problem. Okay, so Umar, you are trading, you trade options, I know already. Options, So, futures, and stocks. like mostly, but you Options, yeah, options, a lot, right? a lot of options, yeah. So options, you are making a money because the option volatility is there. Yeah. So when you are doing it, it is amazing, but it is a two-edged sword, right? Like it Yeah. can kill you as well. Of course. It can take away all your capital. Yes. So about risk management, about your stop losses, is it mind stop loss or is it a system plays a stop loss?
So now at this stage of my life, I'm mentally able to say I'm going to exit here, and I'll exit. Now, if you go to day one, when I first started trading, I had to have a system-based stop loss. Because if I said mentally I'm going to exit here, I wouldn't follow it. You know, $10 पे stock buy किया, बंदा कहता है $9 पे sell करूँगा. 9 पे जाता है, नहीं $8 पे, नहीं $7 पे, नहीं $5 पे. Next thing you know, you lost all your capital. Story of every day. Yeah, everyone. So now I have the mental discipline to be like, okay, well, if it goes to 9 पे बेचूंगा, and I sell it. So I'll have the mental now. But for beginners, don't use the mental. Do an actual stop loss at the level. For me, risk management is the most important thing because our job as traders is to manage risk, manage our capital, right? Our job is to stay alive in this game for as long as we possibly can. And the only way we can do it is if we protect our downside. If we don't protect our downside, we won't be able to stay alive here a long time. So every trade I take, my first question is, where am I going to exit if I'm wrong? Because I don't look at where am I going to exit if I'm right. Where am I going to exit if I'm wrong? How much am I going to lose? And am I okay if I lose this amount? Will this destroy my account? No, I can take this loss. Okay, I take the trade. पहले कैसे trade लेता था, trade देखता था, and I used to be like, okay, when I get in here, this trade's going to go here. I'm going to make $10,000. I'm going to make $20,000. You get excited. Now it's flipped. Now it's like, okay, if I take this trade, I lose $5,000. I lose $6,000. Does the trade risk make sense? Do I have an edge? Yes. Okay, take the trade. All right. Yeah. Alright, so he suggested कि नए लोगों को सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए. तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, अगर 100 रुपीज का ऑप्शन है, आपका स्टॉप लॉस 70 जा रहा है, तो आप उसको 60 पे डालो, 70 पे मत डालो और अपने हाथ से कट कर दो 69 पे. बट जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो हिट करा के चले जाते हैं. ये भी होता है ऑप्शंस के साथ. तो लूज रखना चाहिए. ऑप्शंस के साथ ये होता है, मार्केट मेकर्स स्टॉप को हिट करते हैं और फिर ऊपर लेके जाते हैं. तो वी जस्ट टॉक्ड अबाउट रिस्क मैनेजमेंट कि आपका ऑप्शंस में ऐसा होता है. ठीक है. हाउ लॉन्ग यू होल्ड अ ट्रेड? लाइक आपका होल्डिंग टाइम क्या रहता है? 5 minutes, 10 minutes, no more than 30 minutes. 5 minutes, 10 minutes, no 30 minutes. Okay, that's like most of the time. Most of the time, yeah. Most of my trades, 10 minutes, 15 minutes, maybe sometimes 20. In that 30-minute period, 30 minutes, no more. So for that, you need high momentum, right? Yeah, at times, yeah. So so I need high momentum. I need high volatility. That's why I don't trade every day. मेरी जो trading अगर देखें, I'm not trading every day. I'm looking for days where the market has opportunities. How do you spot those days? You use indicator like ADX जहाँ पे वो बताएगा कि trend strength में है, या how do you figure out that this is a momentum day? So I don't look at indicators because indicators tell you what happened. They can't tell you what will happen, in my opinion, right? So I look at what is happening in the overall market. तो अगर क्या ले आज मार्केट में FOMC है, मार्केट में कुछ बिग इवेंट है, इस वीक अर्निंग्स हो रही हैं, मोस्ट लाइकली उस वीक मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होना. जैसे मार्केट स्टेज कैश, वेट करती है कि न्यूज़ क्या आ रही है, अर्निंग्स कैसे जा रही है, फेड्स क्या कह रहे हैं, मीटिंग कैसे की है, तो मार्केट स्टेज फ्लैट. That's one way. Another way is I look at where we open. Where does the New York session open? Does the New York session gap up, gap down, open in a range? Open कहाँ होता है? Opening के साथ first 5-10 minutes I look at volume. If on the first 5-10 minutes we have strong volume, higher than usual volume, that to me shows me very strong activity. Okay. Strong activity to me indicates that we will get a move. And if there's no high volume, we don't gap up or down in outside of a range, where let's say in a range, I'm kind of like, okay, well, I don't think the market's going to move much. I'm going to stay cash and just sit on my hands. So those days I'm not looking for anything. All right. So like you're saying that when the market is depends, market is opening where the market's outside opening, the range or inside the range. Like past 3 days prior to Friday and Thursday, we were trading in a range for 3 days. In those 3 days, the market didn't have any opportunity. So before the market opens, I'm like, okay, we're in range. Market is waiting for big news. This is the news the market's waiting for. So because of that, we're maybe not going to see a play. So I stay cash. All right. One question regarding options. Yes. You analyze options premium chart or the spot chart? The spot chart. It doesn't make sense to me because think about it, right? The option price moves based on the stock price. So this, no matter what this does, this cannot move that. The spot price will always move the option price. So it just doesn't make sense. This doesn't make sense to me as well. Yeah, it doesn't make sense because
Yeah, for options move under the underlying asset. Yep. It's not the other way around. So looking at the option price is stupid. Stupid, right? You Yeah, just have it to focus doesn't- on the index chart and take your calls or puts based on that. Yeah, yeah. All right, so हमने बहुत बढ़िया बातें की related to options and related to stocks. So do you think you like can share some technical information with people, like लोगों को किस तरीके की चीजें टेक्निकली देखनी चाहिए, some sort of strategy or some sort of technical tip जो उनकी लाइफ इंप्रूव कर सकती. कई लोग को समझ में नहीं आ रहा है, चार्ट पैटर्न खोल लिया, लाइन खींच ली, ट्रेंड लाइन बना ली, इंडिकेटर खोल लिया, आरएसआई भी देख लिया और स्टक हो गए, फ्रीज हो गए, एंट्री नहीं ले पाए, फंस गए. तो व्हाट वन सजेशन यू कैन गिव अस टेक्निकली दैट विल हेल्प देयर? टेक्निकली के इंडिकेटर्स शुरू में सब इंडिकेटर्स पीछे कर दो. मेन चीज़ फोकस करो प्राइस एक्शन पे कि कैंडल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, की लेवल्स कहाँ हैं, कैंडल्स की क्या फॉर्मेशन है, वॉल्यूम कैसा है. दैट्स इट. ठीक है. जो इंडिकेटर्स हैं शुरू में क्या करते हैं कि लोगों को कंफ्यूज करते हैं. ठीक है कि ये इंडिकेटर ये कह रहा है, वो इंडिकेटर ये कह रहा है, तो एंट्री लूँ ना एंट्री लूँ. प्राइस पे फोकस करें और प्राइस को इतना डीप फोकस करें कि अंडरस्टैंड करें कि प्राइस क्या कह रही है. ठीक है. प्राइस जो है ट्रेडिंग में जो चार्ट्स हैं, चार्ट्स एक स्टोरी टेल करती हैं कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट की फेयर प्राइस कहाँ है, फेयर वैल्यू प्राइस कहाँ है, मार्केट इस प्राइस में कंफर्टेबल है या नहीं कंफर्टेबल. तो जब ये चीज़ एक ट्रेडर को अंडरस्टैंड होती है तो इसके साथ एंट्रीज इंप्रूव होती है, एग्जिट्स इंप्रूव होती है, और जो सेटअप्स हैं वो एक बिकम्स अनलिमिटेड. सो इंडिकेटर्स को तो हमको बिल्कुल यूज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है, इंडिकेटर्स आर टेलिंग अस मार्केट क्या किया. यस. It's telling you the past, right? Yeah. Do you use open interest data in trading options? Yeah, I look at open interest data and I look at volume, right? Open interest because I want to make sure कि जो option में trade कर रहा हूँ उसमें activity है. ठीक है. मैं जब कभी option trade कर रहा हूँ 900 contracts, 1000 contracts, right? So I need volume. High I need quantity. I need liquidity, right? So मैं उन चीज़ों को इससे देखता हूँ कि make sure करने के अगर enter किया, exit किया, I can. I also look at the spread, right? कि अगर wide spread है, I don't touch it. Okay. Right? कि अगर bid $4 पे है, ask $5 पे है, big spread, I don't trade it. I like tight spreads because I want to be able to get in and out at good points. So OI, open interest, volume, and the spread. But I trade the same thing consistently. I trade SPY. So SPY has a lot of OI, it has a lot of volume, spreads are tight, so I'm comfortable. Now I want to open up a new stock tomorrow and just go trade options because I'm not familiar with the option contracts. I'm not familiar with how they move. I'm not familiar with how the liquidity will be if I get in 900 contracts, 1,000 contracts. Okay, got it. Yeah. All right. So अभी कोई मैसेज है क्या जो आपको लगता है कि एक बिगिनर ट्रेडर को आप देना चाहते हो, यहाँ पे जो हमारा वीडियो देख रहा है, लाइक वन गोल्डन एडवाइस, लाइक देयर आर सो मेनी गोल्डन एडवाइसेस लाइक वी कैन गिव, राइट? बट वन फॉर अ बिगिनर ट्रेडर, व्हाट विल यू गिव? That trading is very hard, and I'll tell you why. Trading is very hard, and I say this because trading के अंदर पहले trading शुरू करने का you have to have that mindset. I think the mindset traders have when they enter trading is so easy. And when they go and it's hard, they get scared. But if they flip their mindset knowing it's hard and they're mentally prepared it's going to be hard, it'll make the journey easier. That's right. So accept that it's going to be hard and enjoy that it's hard, because the harder it is, the less people that are going to be successful and the more money you can make in that field. Okay. That's how I look at it. The harder something is, I enjoy it, because the harder it is, there's less people at the top. Right? So it's like, okay, this is going to be difficult. I'm going to walk into it, accept that it's difficult. I don't want it to be easy, because if it's easy, think about it. Everyone's doing it. Everyone's making money. It's harder for you to make money, right? That's right. So it's difficult. It's hard. I like that it's difficult and hard. I'm going to work hard to take on the challenge and become that good trader. Instead of, oh, it's going to be easy. In 1 month, I'm going to make so much money. My life's going to change. Not the right thinking. Okay. Right? So the thinking, the mindset component, and then the second, your personal life. You know, people have to work on their personal life. People have to focus on improving their life with sleep, meditation, learning, reading, eating well, exercising, knowing their why, knowing why they want to do this, understanding money, understanding all these things, and just having a clear mindset. That will correlate into everything, even outside of trading. Even if you don't want to trade, but just having the proper mindset will help you in anything you do in life.
That's a great analogy Yeah. that you gave. Very nice. Okay, great. तो बहुत मजा आया अभी तक हमने टेक्निकल भी बातें की, लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर बातें की, सब कुछ बातें की. ठीक है, तो चलो फिर लेट्स सी हाउ इंटरेस्टेड पीपल आर फॉर लर्निंग ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू लर्न अबाउट फ्रॉम यू. सो कॉमेंट ऑर्डर फ्लो इफ यू वांट कि हम उमर के ऑफिस जाएं, ट्रेडिंग फ्लोर जाएं, ब्लैक लाइन ट्रेडिंग जाएं और वहां बैठ के लैपटॉप पे सीखें. और वी विल, इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस, कमेंट योर क्वेश्चंस बिलो, वी विल ट्राई टू एड्रेस दोस एज वेल. ठीक है, और जाना मत, एक बोनस पार्ट बहुत अच्छा आने वाला है जब हम Q&A करेंगे. तो ऑलराइट गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब बूमिंग बुल्स. वो आपने किया ही हुआ है. साथ में आप उमर अशरफ का चैनल भी सब्सक्राइब करो, बिकॉज ही इज पोस्टिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट. बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हैं रिलेटेड टू साइकोलॉजी, लाइव ट्रेड ब्रेकडाउन्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऑलराइट, सो दैट वाज ग्रेट मीटिंग यू उमर. man. Same here. उमर, वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. मैंने बस इतना बोला था 10-year ट्रेडर कोई आ रहे हैं, तो कई लोग ने तो गेस भी कर लिया कि उमर अशरफ आ रहे हैं. तो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. लेट्स सी, वुड यू लाइक टू want to know your point of view? Okay, विवेक अवस्थी इज सेइंग कि भाई मैं ग्रीड में ट्रेड लिया, फिर ना पीएनएल देखा कि प्लस माइनस और डर के मारे एग्जिट कर गया और वो ट्रेड प्रॉफिट में गया. हाउ शुड वी अप्रोच? Don't look at P&L को ना देखें. जब ट्रेड कर रहे हैं चार्ट्स को देखें, P&L को अवॉइड करें. और अगर आप ट्रेड में और आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपकी साइज बहुत बढ़िया है, ट्रेड की पोजीशन बहुत बढ़िया है, तो आप जब भी कोई ट्रेड में आप यू शुड बी कंफर्टेबल कि आप कंफर्टेबल हैं. और जो P&L है उसको ऑफ कर दें. P&L के बारे में ना सोचें, P&L को देखें ना, एक लेवल सेट करें कि इधर अगर गया मेरा स्टॉप है, उसके अलावा मेन फोकस चार्ट्स पे रखें. मतलब स्पॉट चार्ट पे फोकस करो, वो देखो ही मतलब देखो ना, डीमैट अकाउंट, हाँ, राइट? बिल्कुल ना देखो. दैट इज सेम थिंग आई फॉलो. दैट्स ग्रेट. अब वन रिपीटेड क्वेश्चन एवरीवन आस्क, हाउ टू ग्रो अ स्मॉल अकाउंट. Okay. So what's your take on So this? first is, okay, are you good? Like, okay, can you trade well? Do you have proper risk management? Do you have an edge? Do you understand your psychological problems? Have you managed it? If that's a yes, then your question should be, how do you grow a small account, right? Because if those things are good, you'll automatically grow an account. So it just goes into that. So work on that, right? So I believe the answer how to grow a small account is same for how to grow a medium account, how to grow a big account. Same way, yeah. Same answer, yeah. You need to be good at the process. You need to be good at it. If you're not good at it, it doesn't matter if it's small or big. You're not going to make money. That's right. Yeah. That's right. Okay, so someone is asking, what's your hair routine, bhai? I was asking you that. I was asking you what's your routine. Okay. Harsh Singh is asking, he's unable to sit and concentrate for 6 hours in the market. What should he do? 6 hours trading in the markets? I mean, first, don't trade for 6 hours. I trade for 2 hours. Like, I sit in front of my computer for 2 hours. Second, if you're having a hard time concentrating, meditate, right? Get off your phone. Stop spending so much time on your phone. Some people have a hard time focusing because they're on their phone so much. That's right. So their dopamine levels are off all day. So get off your phone. Be disconnected from social media a little bit. Be disconnected from anything that distracts your attention. And like I said, meditate. Meditation will help you, work on your focus levels a lot. That's right. Yeah. Okay, great answer. So Ajay is asking, what is the right age to start trading? Some people are saying that I'm in class 12. Someone is saying I'm 14 years old. Someone said here he's 19 years old. What is the right age of trading? I don't think there's a right age. I think whenever you can, the earlier the better. Start today. But don't you think like a 14-year or 15-year-old guy will, if he face so much of pressure, this might affect his future, or that this depression might what is what you're thinking? I mean, I think if you're 15, 16, my understanding is you don't have the life pressures on you at 15, 16 compared to someone that's 30, has a family, has kids, and so on. You don't have financial responsibility of someone much older. So I think if you are young, you should take the opportunity to start learning, understanding the markets, and paper trading at least. So you get a feel of it, and then slowly start investing a little bit money. So I know people that started at 16 and 18 and 19, they're making so much money. So if you are young, I don't see what the downside is of you starting, and at least start learning. Like subscribe to your channel, learn from you, see how you're trading, see what you're trading, get the knowledge. So when you do get a little bit older, you're able to open an account and fund it and trade it. Great thought process. I would say then there is only one thing that could go wrong, that is having greed. Yeah. When you are like 14, 15, you are thinking that I just get 1 lakh rupees from my father. And don't do that. Don't do that. Put Don't do that. 10 lakh rupees and make get an iPhone and all that. That would damage you emotionally. Oh yeah, don't do that. So as he is advising, I will advise the same.
open a trading, don't open a trading account. Even if you open, no problem, but trade paper, do paper trading. Yeah. I mean, focus on the process. Yes. If you know the process, then you can make whatever, how much money you want, you will get it. So focus on the process. Don't trade real money in the start. And when you start very small, right? Yeah. Because because a lot of people demotivate young people, but he has encouraged you. He's encouraged that you should go ahead, but you have to follow the full advice, which is not to trade real money in the starting and get some results. Once you have some results, start with small capital, then go ahead and think about $10 million like that, right? Yeah. Oh, Nitin is asking a question. Market is same for everyone. Charts are same for everyone. Still, some people lose money on the same day, some people make money. Because everyone understands the charts differently. Everyone looks at them differently. You know, the perception that you have of charts and what you see is differently. Someone will look at a chart and say, we'll go higher. Someone else will look at a chart and say, we'll go lower. Two people will look at a chart and say it goes higher, but one person's psychological problems will make them sell early, not follow their game plan, maybe not let the trade go to profit, where the other person understands charts better, understands themselves better, and they can maximize the trade. So it goes into the perception of a person, goes into the psychology of a person. So there's a lot of different factors. So it's the same thing with everything else. We all have the same data, but it's how we look at the data. How do we look at it? How do we interpret it? You know, same thing with life. We get the same things. How do we interpret it and how do we respond to it? And if a question comes like, so how to know where the market will go? Watch the full channel again. Watch the full channel, every video, because that's the main process, right? Yeah. So there is a question asked by Mr. Crypto 76. Operators ka mindset, like operators. Do you think a lot of people say that big companies or big institutions are there to get retailers? Like, I don't think so that they are there to get retailers, but that's how they function. Like, that's how they function. People always buy late, retailers. So what's your take on these things like operator or stop loss hunting, that they want to hunt your stop loss, specifically your, like something like that? What is your take on this? I mean, they care about your stop loss if you have a lot of money and a lot big stop loss. But if you have like $100 stop loss, they're not going to move a market so up and down for that small little stop loss. But let's say 1,000 people are putting $100 yeah, stop there's loss. a lot. Now the market makers do look at how retail traders trade. Okay. Because if there's a breakout and they're like, so many retail traders are going to buy this breakout and we can pull together so many people where it'll be millions and millions of dollars, then maybe they'll do it. Okay. Right? So you also have to learn how retail traders think and learn to think differently. Because what happened in 2020 is after 2020, we got so many retail traders entering the market. So once so many retail traders enter the market makers also started paying attention to how they trade and how they don't trade. So once market makers figure that out, they're like, okay, well, we're going to get $20 million of stop losses here. Stop it out. Now there's a collective orders of a lot of people. So to an extent, it is true, but there needs to be a lot of capital at place for market makers or market to kind of play that out, in my opinion. Yeah. Mayank is asking, macro events and news, like कितना percentage affect करता है, like किसी भी trading day को मतलब? I mean, macro events 100% affects the market, right? Like FOMC, जब भी FOMC होती है, you know, market is affected by it. My job is I don't care about the macro events. I don't care if we're going in a recession. I don't care if the market's rallying. I want to understand what is happening now and how can I react to right now's action. So I look at macro events to dictate what the market is doing now. I won't look at macro events and I won't say, well, because of the macro event or news that came out today, I think in 2 months the market's going to go higher or lower. I don't care what happens in 2 months. I care what happens now. But macro events do affect the market. They do play a role. Your job is to look at how price responds to the events and trade off price. Okay, so you are saying that fundamentally you should know what is happening, but you don't care what is the outcome. I don't care about the outcome. Are you saying that should know what is going to happen fundamentally, but act 100% purely technical? Yeah, of course. Because we can sit here, because same thing, right? We can interpret a certain level of news differently. I don't know, like we can have inflation data come out. You can say this is good, I can say it's bad. Right. Market will tell us if it's good or bad. So I don't care to have an opinion. So I'll say, okay, well, I think it's good or bad. I don't care. Let's see what the market's action tells us and trade off that. And that technical tells you already. Yeah. Okay. Okay, Umar, a very interesting question. Abhi Wadekar is asking, SMC or price action? I don't know what SMC is. I hear about it all the time, but I honestly don't know what it is. I just hear smart money concepts.
I couldn't tell you enough about it, to be honest. I'll tell you, it's the same thing packaged in new words. They're saying order block. Order block, they say this is order block. Order block, support resistance, demand on supply zone, they say order block. And just when a market makes a higher high, they say it's a break of structure. When it breaks the trend, they say it's change of character, CHOCK, CHOCK, BOS, FVG, fair value gap. Because all this looks so, It looks wild. complicated. So people think this is right. So I've given this answer. This MC or price action, same hai bhai. Same hai. Ajay is asking, how much return on investment we should expect trading intraday? This, in my opinion, this depends on your strategy, how you trade, how aggressive you are. Someone is more aggressive than someone else. Someone is less aggressive. Depends on your risk tolerance. So there's no right answer. It's all contingent on how I know this, that there's not right answer. Yeah. But let's say I'm saying average trader, normal strategy. People ask me also all the time, what should I expect on a monthly basis? And I know there's no answer for it. I don't want to see what you'll say. I don't know what to expect. I can tell you, for me, I'll have months where I made 100%, and I had months where I made no percent. Okay. Right. So it all varies. Also on months, on market activity, market action, how aggressive I am. If I'm very aggressive, like I have days where I make 40%, right, of my position, or 30% of my position. But then there's days I make 1%. Right, I'm not aggressive. Maybe the market isn't giving me opportunity. So it's a very open-ended question that it's impossible to give an answer for it. That's I right. can only just answer what I do. Someone is Amit Raj is asking, sir, प्यार से दूर कैसे रहे? लड़की छोड़ के चली गई. I'm not joking. So प्यार से दूर कैसे? Oh man, some of the questions. लड़की छोड़ के चली गई, क्या करे अब? उमर भाई बताओ अब. Focus on trading, make money. She'll come back. Right? Great. I hope अमित राज तुमको तुम्हारा जवाब मिल गया. लड़की से ध्यान छोड़ो, अब काम पे फोकस करो. ठीक है. Shreyansh is asking, who are better traders, introverts or extrovert? And my question, are you an introvert or an extrovert? I think I'm both. Okay. I think depending on the day, I'm both. Some days I want to be around people. Some days I don't want to be around no one. I want to be by myself. So I would like to consider them both, depending on how I'm feeling about the day. I mean, who's better, introverts or extroverts? I don't really know. I don't know. These are interesting stats. I couldn't tell you. Yeah. People are even so like. Yeah. I mean, wrong questions, right? Not the question that's going to make you a better trader. Right? Exactly. Right. A lot of you are having a lot of questions. No problem, but that is not going to help you. So I think, people have to get better at asking questions, because you can get a lot from the right questions. I agree. Right? Bad questions won't really get you anything. Yeah. Like, because there are stupid questions, right? Check comment section in this video only. Go ahead, check. Okay, let's see. Okay, someone is asking, should we expect regular income from trading? Consistent regular income from trading? No. In my opinion, I think trading is not a linear game where you make 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Trading is a game where you make 5,000, 15,000, 4,000, 12,000, 30,000, 2,000. That's how I've seen in my trading career. That's how it's been. That's right. I don't think it's ever going to be consistent in terms of the same number. It'll be higher or lower, but you're supposed to, in my opinion, you're supposed to play the quarter game. I play the quarter game, 4 quarters in a year. I'm trying to be good every quarter, not every day, not every week, every quarter. So I kind of play a longer game, and from there I try to manage expectations from a quarter instead of a daily aspect. Okay, that's nice. So Umar, Mr. Nitin is asking, loan लेके trading करनी चाहिए क्या? No. No. That's a different kind of no. No, नहीं, बिल्कुल नहीं. Absolutely no. No. Yes, but I mean, the answer is saying because we are thinking that you are not making money from trading. That's why you want to take a loan. If you are able to make money, then you can take a loan. Fine. Yeah, it's a different context. Yeah, that's a different. But if you're not making money, a loan isn't going to make you make more money. You're already going to lose more money. You're going to lose the loan money too then. Yes. Right, so. Yes, the rate of interest of loan is, let's say, 15% a year, and you can make more than that. You can take a loan if you have the records, if you have proven yourself. Yeah. Then, but just asking loan लेके trade करूँ? नहीं. Trading की dark side. क्या देखना चाहते हो भाई? क्या? I will last question. Sapna is asking, क्या market बंद हो सकता है? Will market close sometime?
sometimes I'm like, there's no way those questions are real, and then you show me. And I know, I believe you, and I'm like, are they joking or are they serious? Like, Yep. That's what happens when you have Reliance in India and now everyone is having mobile and internet. So yeah, I mean, markets can't shut down. It's a function of, you know. yes, Apple. What about everything. Apple, It's a Tesla? function- All it's a these function of everything. companies are registered in stock market, It can't shut down. People are scared. It's like, oh, what if I invest, my $100 or 100 rupees? What if I lose it and the market shuts down? It comes from a place of fear. So, yeah, no way. the biggest example is Corona happened, so everything shut down. But Yeah, stock market open, yeah. There were You need it. rumors Yeah, that yeah. it might shut down for 4 months. Yeah, no, But no. it can't. It can't. It facilitates the world trades. There's no way. There's trillions of dollars involved. You can't shut something down with that much money. Whenever there's a lot of money involved in something and there's so many players, it won't shut down. There's no way. That's right. Yeah. All right. Thank you, It was bro. a Great Appreciate video it. today. Same here. Thank you, हाँ, man. मजा आ Appreciate गया? it. बहुत मजा आया. Thank you, man. Pack up. Thank you. ऑलराइट गाइस, आई होप आपको बहुत मजा आया वीडियो देखने में. मेक श्योर कि आपको जो मैंने इंडिया टूर के बारे में इंफॉर्मेशन दी ना, मेरी टीम को कांटेक्ट करके पूरी डिटेल्स दे लो कि कौन सी सिटी में हम कहां रहेंगे, कब रहेंगे. एंड मेक श्योर टू कमेंट order flow if you want to see a new video on this, and make sure to subscribe Umar Ashraf on YouTube.